हेलो, गुड इवनिंग, हेलो, नमस्कार दोस्तों। हाउ आर यू डूइंग? कैसे कर रहे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आई होप यू गाइस आर टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। मार्केट सिचुएशन थोड़ा सा बेटर होने की कोशिश कर रहा है, बट आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर मेकिंग मनी फ्रॉम द मार्केट, बिकॉज मार्केट में थोड़ा इस तरह से चल रहा है अभी मार्केट में कि मार्केट दिखाता है आपको अच्छा हो रहा है, फिर वापस नेक्स्ट डे करेक्शन आती है, फिर दिखाता है अच्छा हो रहा है. So it's kind of a market which is, I would say, not a traders friendly market. If you are used to making small trades in the market with a small stop loss, probably this is a market which is keeping you busy. But seriously, agar if you ask me, especially from people who trade swings in the market, swings मतलब जो 2 दिन से लेके 30-35 दिन का positions में trade करते हैं, I don't think so. This is a market which is giving any hint to us. Anyways, uh, weekend trading strategy मैं record करूंगा and I'll make it live tomorrow. But let's talk about the broader market, and this learn to trade session is all about you. You can ask me questions, and I will try to give a reply to your questions. The questions could be anything. कुछ भी आप पूछ सकते हैं regarding any question you may have faced while you have watched my Learn to Trade series. By the way, अगर आपने मेरा Learn to Trade series नहीं देखा है, जहां पर मैंने अनुपूर्णा को समझाया पूरा ट्रेडिंग ABCD, इनफैक्ट literally I have opened up everything which is there inside me in that Learn to Trade series. I'm constantly learning new things, and my endeavor is to keep on adding new learning content for all of you. So एक छोटी सी बात, some of you are asking me, जो Learn to Invest जो मैं record कर रहा था, which is there in my YouTube channel. I recorded Learn to Invest, basics of investing, why you should invest in stock market. So that is still there. And then I started initiating this concept of Learn to Invest Sector Special, where I covered the basics of automobile sector. And I promise that I will keep on recording more sectors for your understanding of those sectors. Unfortunately, I realized that because there is so much effort involved in creating learning content around sectors, and there is obviously fair bit of work there. So I decided that Learn to Invest Sector Special will be hosted in Elon Markets. तो हम उसको YouTube में अभी लाइव नहीं कर रहे हैं. It will be available in Learn to Invest Elon Market section, which will be available in elonmarkets.com. तो जो सेक्टर जिस पे मैं काम कर रहा हूँ अभी वो है केमिकल सेक्टर, एंड केमिकल सेक्टर के अंदर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, एंड आई एम ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरी इंडस्ट्री इन डिटेल. तो वो मैं वीडियो रिलीज करने वाला हूँ इलन मार्केट्स के अंदर में. आई होप आई विल बी एबल टू रिलीज वेरी सून. So Learn to Invest Sector Special is not available on YouTube. It will be available on Elon Market. So I hope you guys are going to support me. I'll try to keep it very, very basic cost so that it is available for everyone, because there's so much of effort going in. I thought it's better to get some cost recovery out of that. By the way, we don't make any money from YouTube. Very honestly, what YouTube gives us is a peanut. थोड़ा सा पैसा देता है YouTube. And you know that we don't push a third party product. We are not influencers. मैं कोई भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेच के आपको उसमें से पैसा कमाने वाला गेम मेरा नहीं है. Yes, I do promote my product because I'm an entrepreneur. I have a very strong conviction in my product. I have a control in my product. तो उसको लेके I do get back to you always with new offerings which we have. And this is a very interesting thing which we are doing on 29th of July. 29 जुलाई हम एक मैराथन ट्रेडिंग डे करने वाले हैं फ्रॉम मॉर्निंग 9 o'clock टू नाइट 8 o'clock, जहां पर इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी सब कुछ कवर करने वाले हैं. एंड दिस इज ओपन फॉर ओनली स्टॉकेज क्लब मेंबर्स फ्री ऑफ कॉस्ट. तो अगर आप स्टॉकेज क्लब के मेंबर हैं तो आपके लिए ये पर्टिकुलर इवेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. This event is worth 5,000 rupees, which we have given free to all the Stockage Club members. तो जो भी अभी तक Stockage Club से नहीं जुड़े, we have almost 9,000 members now who are connected as Stockage Club members. So अगर आप नहीं जुड़े, you should become part of Stockage Club to enjoy the constant learning and earning opportunities which we are providing to all the club members. All right, so this is it. So let me start taking questions. So first question is a no question. So Mr. Chenal has contributed 100 rupees
for some good exercise. Thank you so much, Mr. Chanal. Really appreciate your money, and I'm going to use this money for very, very good cause, so that we help people who are needing money with this amount which you have contributed to me. In fact, that is always my endeavor, to help the needy people, be it on the knowledge side, be it on the financial side. So in case you want to contribute something, 30% will be taken by YouTube, and the rest money, whatever we get, we will try to give it to needy people, whoever get in touch with us. चलिए, कुछ कुछ क्वेश्चंस लेते हैं. मिस्टर प्रसाद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो जनरस. Okay, so this is a question by Dhiraj. So make a video on your life journey. What problems faced by you when you become beginner in trading? Oh, I have recorded few videos around my life journey as a trader, but it's very interesting. I can share with you some more detailed, more insights about what kind of trading strategies I deployed, where did I go wrong. ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक धीरज आपने सजेस्ट किया है, सो आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड समथिंग अराउंड दिस टॉपिक. ओके, I'm just trying to take some questions. Oh, this is an interesting question from Rajesh, and Piyush का मैं बाद में लेता हूँ. 2 आवर टाइम फ्रेम में कितना परसेंटेज मूवमेंट कैप्चर करना है? वेल, 2 आवर टाइम फ्रेम में आई टिपिकली टारगेट 10%. 10% का अगर हमको मूवमेंट मिल जाए, 3-4% का स्टॉप लॉस में, आई थिंक वी आर सॉर्टेड. तो डोंट ट्राई टू टारगेट 20-25% मूवमेंट इन 2 आवर टाइम फ्रेम. लेट्स टॉक अबाउट यस बैंक. ओ पीयूष, आप पूछ रहे हैं कि यस बैंक का आपको क्या लगता है, तो चलिए मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर देता हूं और फटाफट डिस्कस करते हैं यस बैंक को लेके. ऑलराइट, सो आई होप यू गाइस आर एबल टू सी माय स्क्रीन. ओके, सो यस बैंक का चार्ट देख लेते हैं. यस बैंक, सो oh, this is interesting. कुछ हो रहा है इसके अंदर में. So yes bank, from a medium term perspective, RS55 is positive. That means इसमें momentum तो आ चुका है. RSI 50 के ऊपर है, RS21 भी 0 के ऊपर है. This is very good chart structure from a recovery perspective. Okay, यहाँ पर 2 आवली चार्ट में भी बाइंग आ गया है और RS 0 के ऊपर है, RSI 50 के ऊपर है. तो yes बैंक looks to be in momentum. अब इसमें ट्रेड कैसे कर रहा है? तो प्रीवियस स्विंग हाई इसका यहां था, तो ऑलरेडी इसके ऊपर में ट्रेड कर रहा है यस बैंक, सो विच इज हेयर. तो 12-13 के ऊपर में ये ट्रेड कर रहा है. आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट स्ट्रक्चर. किसी को अगर पोजीशन बिल्ड करना है तो छोटा क्वांटिटी में इसके ऊपर में पोजीशन बिल्ड कर सकता है, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लुक्स टू बी वेरी वेरी फेवरेबल. तो I must congratulate Mr. Piyush for coming out with this stock. Looks like the chart is showing that the stock has decent momentum. Okay, let's see some other. Okay, Zaki का क्वेश्चन है, वी गार्ड का फंडामेंटल सब ठीक है, लेकिन फिर भी प्राइस इंक्रीज क्यों नहीं होता? चलिए जाकी, आपने ये क्वेश्चन पूछा है तो मुझे मौका मिल गया कि आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ओके, एंड आई मस्ट थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, बिकॉज यही मार्केट का सबसे बड़ा सत्य है, सबसे बड़ा सत्य है. आपके इस क्वेश्चन के अंदर में दो बातें हैं, एंड गाइस प्लीज प्लीज लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन व्हिच आई वांट टू हैव विद ऑल माय लर्नर्स. ओके, जब हम मार्केट के अंदर में ये स्टेटमेंट देते हैं कि वी गार्ड का फंडामेंटल सब ठीक है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट एंड इट्स योर जजमेंट दैट इसका फंडामेंटल ठीक है. You have given that judgment based on some data points access, some information access, some understanding of that business, right? Having said that, always believe that there is a bunch of people who are far more intelligent, far more updated, and far more resourceful than you. Okay, you can call them operator, you can call them big people, whatever name you want to call them, बट पॉसिबली है कि उनके पास में बेटर इंफॉर्मेशन है आपसे ज्यादा. ऑलराइट, सो जब हम किसी भी स्टॉक पे जजमेंट बनाते हैं, फंडामेंटल जजमेंट बनाना एक एक
औपचारिकता है. Yes, you want to make that, especially if you are a value investor. You want to make that value judgment because finally a stock will become 5x, 10x because there is a value embedded inside the stock. बट जब एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर की बात करते हैं ना, तो वो वैल्यू जज नहीं कर पाता है, नहीं कर पाएगा. बिकॉज वैल्यू कैसे मिलता है? फ्यूचर का जो अर्निंग पोटेंशियल है उससे वैल्यू डिराइव करता है. फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल जज करना इतना इजी नहीं है. You can only make a judgment on fundamental by looking at the past behavior. करेक्ट? जैसे जाकी साहब ने किया, विगार्ड का फंडामेंटल अच्छा लग रहा है, बट आपने कैसे जज किया? पास्ट को देख के जज किया. बट फ्यूचर इस कंपनी का क्या है वो तो आप जज नहीं कर पा रहे. तो कोई ना कोई है जो वो जज कर रहा है. इसीलिए स्टॉक प्राइस जो है वो स्ट्रांग नहीं है. चले चार्ट देखते हैं. It's a very important question, and I'm so happy that you have asked this question for the benefit of all 900 people who have attended today. By the way, all of you who have attended, I need a favor. Why don't you click a like so that YouTube knows that this is a good session going on, and YouTube also recommends other people to attend this session. The more you give like, the better the algorithm will be able to judge my session. Okay, not that I'm really worried about likes because that doesn't give me money, but it's always good to reach to as many people because stock market knowledge is something which is required by everyone. Now look at this chart, Zaki. So when you say that fundamentally stock price is good, sure, as I said that you have made the judgment. Okay, बट आप अगर टेक्निकली भी एक प्राइस एक्शन को जज करें तो उससे भी आपको ये नजर आ रहा है कि यस द स्टॉक इज स्ट्रॉन्ग. स्टॉक स्ट्रॉन्ग है. यहां से वो स्ट्रेंथ चालू हुई स्टॉक की और वो तो स्ट्रॉन्ग ही है, वीक कहां है? सो इफ आई कैन क्लब फंडामेंटल्स विथ प्राइस एक्शन, आई एम सॉर्टेड, इजंट इट? सो जाकी, अगर आपने ये कहा है कि ये प्राइस फिर इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है, वेल आप क्या बेसिस पे बोल दिया आपने? बिकॉज प्राइस जो है वो यहां था 185 का 225 हो गया है. हाँ, ऊपर से ये काफी गिर गया, ऊपर से अभी तक ये बढ़ा नहीं है. मे बी इसमें कई रीजंस होंगे जिसके कारण प्राइस हैज नॉट गॉन अप. मे बी द प्राइस इज नाउ रेडी टू गो अप. सो व्हाट आई एम सेइंग, एंड दिस इज माय हम्बल सबमिशन टू ऑल द लर्नर्स एसोसिएटेड विद मी, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है दैट आप फंडामेंटल जजमेंट बनाइए बट मोमेंटम को भी ध्यान रखिए. बिकॉज अगर मोमेंटम नहीं होगा तो हमारा पैसा खाली पड़ा रहेगा, स्टक हो जाएगा, एंड वी विल नॉट बी एबल टू जनरेट रिटर्न आउट ऑफ इट. Let us take two more questions from Pralhad Baghel. Sorry if I have pronounced your I have pronounced your name incorrect. So give your views on KPIT and intelligent design. Well, पहली बात मैं व्यूज नहीं देता हूँ स्टॉक पे. मैं आपको एक प्रोसेस बता दूंगा, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता दूंगा कि आपको कैसे देखना है, बट मैं व्यूज नहीं दूंगा, न मैं टिप्स दूंगा. बिकॉज पहली बात, मैं अपने आप को कुछ भी नहीं मानता हूँ. आई एम नो वन इन दिस मार्केट, सो हाउ कैन आई गिव यू अबाउट एनीथिंग? आई कैन ओनली शेयर विथ यू माई लर्निंग्स एंड एम्पावर यू टू क्रिएट योर ओन व्यूज. बिकॉज फाइनली हर चीज का व्यू आपको खुद बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो चलिए शेयर करते हैं स्क्रीन शेयर. इन द मीन वाइल आई टेक द स्टॉक एनालिसिस आउट. लेट मी जस्ट KPIT टेक्नोलॉजीज पे चलते हैं. ओके, सो देखिए, दिस इज द चार्ट स्ट्रक्चर वेयर दिस स्टॉक इज राइट नाउ डूइंग नथिंग. ये एकदम मार्केट के हिसाब से काम कर रहा है एंड it is consolidating right now at these levels. 200 moving average is 485. तो ये एक बहुत अच्छी खबर है कि ये स्टॉक ऑलमोस्ट अपने सारे मूविंग एवरेज के कन्वर्जेंस पे है. I would buy this stock if the stock crosses this level which is 522. इसके ऊपर में जाएगा तब मैं लूंगा, नहीं तो मैं इस स्टॉक को अभी आज के रेट में मैं अपने पैसे को इस स्टॉक में अटका के नहीं रखूंगा. ठीक है. The other stock is Intellect Design. See, I am a very specific price action momentum driven person. तो मुझे अगर किसी स्टॉक में मोमेंटम दिखता है तभी मैं आता हूं, और अगर मोमेंटम निकल गया है तो मैं निकल जाता हूं. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज फॉर मी
exit is as important as entry. For a value investor, entry is important. But for me, because I'm a momentum guy, I want to exit at the right time and I want to enter also at relatively nice time. So intellect design is also strong. If you see, थोड़ा सा ये strength की तरफ है. अगेन इसमें भी मैं ये वाला जो प्राइस लेवल है इसके ऊपर जाएगा तब मैं लूंगा. अभी मैं इस प्राइस पे शायद इस स्टॉक को भी अवॉइड करने की कोशिश करूंगा. ऑलराइट, आई होप दिस वाज लॉजिकल. By the way, guys who have just joined me, this on 29th of July, एक बहुत अच्छा इवेंट हम लोग कर रहे हैं और उसको हम कह रहे हैं लाइव ट्रेडिंग मैराथन, जो सुबह 9 बजे से लेके रात को 8 बजे तक हम लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं कुछ एक्सपर्ट्स के साथ में. एंड दिस विल बी ओनली फॉर विथ इनविटेशन बेसिस फॉर स्टॉकेज क्लब मेंबर्स. तो जो स्टॉकेज क्लब के मेंबर हैं उनके लिए ये एब्सोल्युटली फ्री है. दिस इज वर्थ 5,000 रुपीज बट आपके लिए फ्री है. तो इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ स्टॉकेज क्लब ये, प्लीज बिकम पार्ट ऑफ स्टॉकेज क्लब एंड एंजॉय दीज अमेजिंग लर्निंग इवेंट्स विदाउट पेइंग अ कॉस्ट. और अगर आपको स्टॉकेज क्लब के बारे में और जानना है तो जस्ट गो टू stockageclub.com and see this amazing community of more than 9,000 people we have built and helping them to learn and earn from stock market on a real time basis. Okay, so just go to stockageclub.com और उसके थ्रू आपको स्टॉकेज सोशल का एक्सेस मिलेगा which has some really nice interactions and serious engagement happening with the club members. So if you are interested in live trading, please join this event and join the club. Okay, और देखते हैं और क्या क्वेश्चन है. ओके, अडानी विल्मर लॉन्ग टर्म कैसा है? वेल, लॉन्ग टर्म, अडानी देखिए, लॉन्ग टर्म में तो हम लोग सब फाइनली आर डेड. तो मुझे नहीं पता है कि लॉन्ग टर्म में कौन सा स्टॉक कैसा है, बट मुझे ये पता है कि अभी स्टॉक जो है वो मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है. तो जब तक ये आउट परफॉर्म नहीं करेगा मैं नहीं लूंगा. और अगर मुझे लॉन्ग टर्म देखना है तो मैं इसका वीकली चार्ट देखना चाहूंगा. तो वीकली के अंदर में देर इज नो व्यू, इसको फंडामेंटल ही हमको जज करना पड़ेगा बिकॉज ये नया लिस्टिंग है. तो फॉर मी it's difficult to make a judgment right now that whether stock will go up or not because the momentum right now is not as good as it looks like. क्या आप मेरे को ऑफलाइन ट्रेनिंग दे सकते हैं? वेल, आई डोंट डू ऑफलाइन ट्रेनिंग्स एंड आई हैव ओनली वन ट्रेनिंग प्रोग्राम which I don't take alone. My training program, if you want to become a trader, my training program is, which is not my alone because मुझे खुद ट्रेनिंग प्रोग्राम में कोई इंटरेस्ट नहीं है. आई रन अ मल्टी एसेट ट्रेनिंग प्रोग्राम जहां पर 5 मेंटर्स हैं हम लोग एंड ऑल 5 मेंटर्स आर एडिंग वैल्यू एंड आई एम ट्राइंग टू मेक पीपल मल्टी एसेट ट्रेडर्स. तो 5 मेंटर्स एंड 3 एसोसिएट्स मिलके हम एक मेंटरशिप प्रोग्राम रन करते हैं. सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, just type elonmarkets.com/tmp and know more about this mentorship program. Okay. Chinamana has a question. Vivek, can I take a trade in Bata India as per the study you taught last week in making money in falling market? I want to sell 1760 put and buy 1700 call. Thank you so much for asking this question. Really, really excited to answer this question. Finally, someone is practicing what I have been teaching. Oh, this is Bata India. No, you can't. Just a minute. What is this? Just a minute. Just a minute. Just a minute. Just a minute. This is a futures contract. Let me take the cash market. So Bata is right now strong stock. So I want to sell 1760 put and buy 1700 call. No, I never asked you to buy call, Mr. Chinnan. What I said is sell 1760 put and buy 1700 put, not call, because we are talking about credit spread. Credit spread मतलब आप पुट बेचते हैं क्योंकि आपको लग रहा है स्टॉक नीचे नहीं जाएगा और नीचे का पुट ले लेते हैं because you want to enjoy the margin benefit. So to answer the question, yes, you can do this, but don't buy call. You have to buy 1700 put.
Okay. Uh, Mr. Samrat is saying he has a question. Can I please make a video on how to practice chart reading? Well, the chart reading is explained by me. Learn to trade initial sessions. तो आप learn to trade देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा. Lalit is asking question. Can a person who is completely dependent upon his job can be a pro trader and make money and live his job and services? Absolutely, you can. You should start by doing part-time trading, and after I would say, तो मैं ना चले ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ललित. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. तो मैं आप लोगों को एक रोड मैप देता हूँ, ठीक है, कि आपको कैसे ट्रेडिंग की तरफ जाना है. सो फर्स्ट थिंग, अगर आपका जॉब है और आपका बिजनेस है, उसको आप नहीं छोड़ेंगे, नेवर. पहली बात, जो भी आपको पैसे दे रहा है, आपका जॉब है या आपका बिजनेस है, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड विद दैट जॉब और योर बिजनेस. while you are in that job or business, start part time trading market. पार्ट टाइम ट्रेडिंग बहुत अलग अलग तरीके से की जाती है. वीकेंड ट्रेडिंग हो सकता है कि वीकेंड एनालिसिस करके वीकडे में तभी ट्रेड करूंगा जब कोई ना कोई अलर्ट आएगा. आप पार्ट टाइम कमोडिटीज ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप पार्ट टाइम करेंसी ट्रेडिंग कर सकते हैं. सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग पार्ट टाइम ट्रेडिंग. ओके, दिस आई विल क्रिएट अ वीडियो एंड एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट टाइम ट्रेडिंग टू एवरीवन. ठीक है, 2 साल तक, मार्क माई वर्ड्स, 2 साल तक पार्ट टाइम ट्रेडिंग करिए. और अगर आप पहले 6 महीने में ब्रेक इवन है, मतलब आपने चालू किया 10 लाख से और 6 महीने में आप 10 लाख पे हैं, गिव अ पैट ऑन योर बैक, शाबाश. क्योंकि अगर आप मार्केट में पहला 6 महीना पैसा नहीं खोए तो यू हैव प्रीटी मच अराइव्ड. इसका मतलब ये नहीं कि हम जीरो ट्रेड करें. पहला 6 महीना अगर मैं जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में बैठा हूं तो दैट मीन्स यू हैव अराइव्ड. Wow, fantastic. We have 1000 viewers in this video. Thank you so much for being live with me. And if you're liking this session, press a like, because जितना आप like दबाएंगे उतना YouTube बोलेगा सबको कि भैया कुछ अच्छा हो रहा है, तो आ जाओ ज्वाइन कर लो, है ना. तो पहला 6 महीना ब्रेक इवन, उसके बाद 2 साल, लाइक 6 महीना और 1.5 साल, तो 2 साल के बाद में आपको मोरलेस एक फीलिंग आ जाएगी कि इज ट्रेडिंग समथिंग फॉर मी, कैन आई लीव इट, कैन आई डू अ फुल टाइम ट्रेडर. वो आप सिर्फ डिसीजन 2 साल बाद ले सकते हैं. बिकॉज आई रन अ वेरी लार्ज प्रॉप डेस्क, आई अंडरस्टैंड ट्रेडर्स, आई अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी, and I have seen that on an average a trader takes 2 to 3 years depending upon the IQ and EQ. IQ and EQ. आपको 2 से 3 साल लगते हैं एक इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, कंसिस्टेंट, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में. ठीक है, तो द पाथ ललित शुड बी, चालू करो. सबसे पहले जो काम कर रहे हो उसको प्रणाम करो कि बॉस तुम हो, इसलिए मैं ये सोच पा रहा हूं. अगर तुम नहीं होगे, मंथली इनकम नहीं आएगी, तो मैं सोच भी नहीं पाऊंगा. तो कभी भी ये गलती मत करना कि अपना जॉब छोड़ दो डे वन. इट्स अ ब्लंडर एंड आई रियली डोंट अप्रिशिएट पीपल promoting people to leave job for trading. It's a biggest crime you are committing by giving false commitment to people. पहला 2 साल तक आपको पार्ट टाइम रह के एक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, अपने बिलीफ सिस्टम को तैयार करना पड़ेगा कि हाँ फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं. उसके बाद 2 साल बाद आपको फुल टाइम जाना पड़ेगा. जब आप फुल टाइम जाते हैं, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए से फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं कर सकते. मिनिमम कैपिटल आपके पास होना चाहिए 10 लाख जब आप फुल टाइम करते हैं. बिकॉज एक फुल टाइम ट्रेडर को 30 से 35% रिटर्न कम से कम बनाना चाहिए, कम से कम. नहीं तो वो क्यों कर रहा है? क्योंकि इतना इंटेंस काम है, ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत इजी काम नहीं है. दिस इज इंटेंस. एंड इफ यू आर इंटेंसली इन्वॉल्व इन समथिंग, यू वांट अ बेटर रिटर्न, राइट. तो 10 लाख रुपए में अगर हम 30-35% बनाएंगे तो 3-4 लाख रुपए बनाएंगे. इतना नहीं बनाएंगे एब्सोल्यूट टर्म्स में. तो हम ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? और इवेंचुअली यू शुड एस्पायर टू बिकम अ मल्टी एसेट ट्रेडर. मतलब कमोडिटी, करेंसी, इक्विटी सब आपको आना चाहिए. मल्टी एसेट ट्रेडर बनने के लिए आपको चाहिए 25 लाख रुपए. तो वो आज नहीं आ सकता है. अगर होगा भी तो आप डालोगे नहीं आज, क्योंकि आपको तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है. एक 25 लाख का कॉन्फिडेंस अलग होता है, 50 लाख का कॉन्फिडेंस, 2 करोड़ का कॉन्फिडेंस, 10 करोड़ का कॉन्फिडेंस, 100 करोड़ का कॉन्फिडेंस. वो कॉन्फिडेंस आने में भी तो टाइम लगता है. आप क्यों समझते नहीं है कि समय जो है वो आपको कॉन्फिडेंस भी देता है एक्सपीरियंस के साथ में.
So this is the path, Lalit, you have to follow. And trust me, if you follow that path, which I know that only 1% people will follow. अगर 10,000 लोग आज लाइव होंगे, इस वीडियो को देखेंगे कभी ना कभी, उसमें से 1%, मतलब 10 लोग इस पाथ को फॉलो करेंगे, बट वो 10 लोग अच्छे ट्रेडर बन के निकलेंगे. देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज लोग कर रहे हैं ट्रेडिंग, पीपल आर मेकिंग मनी. लेकिन दो बात याद रखना, समय देना होगा, ऑनेस्ट, इंटीग्रिटी, रियल में अपने आप को सही तरीके से मार्केट में इन्वॉल्व करना होगा, एंड मल्टी एसेट अंडरस्टैंडिंग रखना होगा. खाली एक थर्सडे एक्सपायरी बैंक निफ्टी का मैं काम कर रहा हूं, इट इज नॉट एट ऑल अ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल. आप इमेजिन कीजिए अगर एक्सचेंज 3:30 बजे का रात को 12 बजे तक कर लेता है, तो सुबह 9:15 से रात तक 12 बजे तक मार्केट में वोलाटिलिटी स्प्रेड हो जाएगी. तो जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनकी बैंड बच जाएगी. नेवर बी डिपेंडेंट ऑन वन एसेट क्लास, वन स्ट्रैटेजी, वन मार्केट. इट शुड बी मल्टी एसेट. इसीलिए मैं बार बार प्रमोट करता हूं, सीखो मल्टी एसेट. जरूरी नहीं कि आपको सारे एसेट्स में आज ही ट्रेड करना है, बट 5 साल बाद अपने आप को ऐसा तैयार कर लो कि करेंसी में ट्रेड करना तो उसमें मौका, कमोडिटी में ट्रेड करना उसमें मौका, जहां अपॉर्चुनिटी मिले मैं वहां पर मार्केट में ट्रेड करके पैसा बना सकूं. बट द प्रॉब्लम इज दैट सब कोई बहुत जल्दी में है. एवरीवन इज इन अ हरी, पीपल वांट टू मेक मनी इन अ हरी. सो मार्केट के अंदर में जो हड़बड़ी कर गया, it's very difficult for that person to sustain in the market, right? So this is a small, you know, just I'm just trying to take one or two more questions. Okay, ये देखिए, मिस्टर धरल का क्वेश्चन देखिए. Sir, can I start trading with 5,000 rupee in cash market? Now I want all of you to type an answer. Comment में आंसर लिखिए. What should be the answer? Yes or no? आप ही बताइए इनको. क्या 5,000 रुपए से ट्रेडिंग करना चाहिए? आप ही बताइए. Yes or no? Let's see what's the answer. Yes or no? Yes, yes, yes. Yes, no, 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 no. Yes. Surprisingly, no, yes, yes, no, 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 no. So I would say 60% is no, 40% is yes. So 5,000 रुपए से कैश मार्केट में आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं, कर नहीं सकते, सीख सकते हैं. वो भी कभी ना कभी करना ही पड़ेगा. यू विल हैव टू डू ट्रेडिंग, कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा. तो 5,000 रुपीज से आप ट्रेडिंग सीख जरूर सकते हैं, बट ट्रेडिंग करके यू कांट एक्सपेक्ट टू मेक लॉट ऑफ मनी विद 5,000 रुपीज. So I'll take a last question for this, because today is Saturday and I don't want to hold you for other activities on Saturday. So okay, this is a good question. For beginner, one should need to stay in present situation for that is price, or always try to predict future price. For beginner, it's always advisable to stay in the current situation and try to judge what the current situation is and predict the future based on the current situation. But अभी आज के रेट में I think beginner को current में ही focus करना चाहिए, and all the models which I say relative to relative strength and other things are good enough model to follow what is happening in the current situation in the market. All right, guys, before we before you before we close this, again a small reminder, on 29th of July we are having this event for Stockage Club members. तो अगर आप स्टॉकेज क्लब के मेंबर नहीं है तो आ जाइए, एटलीस्ट फॉर अ मंथ ट्राई कीजिए स्टॉकेज क्लब को. You will be able to attend this event as well as Stockage Club में 9,000 से ज्यादा लोग हैं, तो you are going to learn a lot from them. और अगर पसंद आएगा तो इसको ईयरली में अपग्रेड कर लीजिएगा बाद में. But it's not a bad exercise to come and become part of Stockage Club, because जो मैं अभी आपके साथ ऐसे कर रहा हूँ,
स्टॉक एक्स क्लब में मैं रियल टाइम अपने लर्नर्स के साथ में जुड़ा हुआ रहता हूँ थ्रू माय प्लेटफॉर्म स्टॉक एक्स सोशल. तो अगर आपको अच्छा लगे तो definitely we would like to have a long term relationship with you going forward. Thank you so much for spending your precious time with me. 30 minutes. I'm very happy that I got your time, and I hope it added value. Learn, practice, network, and try to be a better learner and practitioner in the market. Bye bye. Please take care of yourself. Have a great Sunday ahead.